वॉइस ओवर पर चर्चा. So welcome to another episode of Voice Over Par Charcha. In this special episode, it's an honor to have Rakesh Jagtiani sir as our guest. He is a senior voice artist, a seasoned voice artist, a voiceover coach, the founder of Voiceline Studios, and he does voiceovers in 3 languages, English, Hindi and Bengali. So sir, welcome to Voice Over Par Charcha. Thank you so much, Harsh. It's been an absolute pleasure. I've seen the work you've done and some of the podcasts you've done, and it's an honor being here. Thank you very much for calling me. Thank you so much, sir. So, sir, before we start the episode, very curious to know about your voiceover journey. शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये जानना चाहते हैं, sir. Right. So, I meet a lot of people who got into the voiceover industry because they had the passion for the voice and they really wanted to do something with the voice. मेरी कहानी जरा अलग सी थी that I was in the garment trade, textiles. Okay. So, yeah, उस time garment exports बहुत बड़ा था. I'm talking of 2006, 7, 8. And some people would tell me, यार राकेश की आवाज अच्छी है, या तो कहानियां अच्छी बोल देता है, why don't you do something with your voice? I mean, one really didn't know much what to do with the voice, but one day these guys landed up in the morning, सुबह 6:30 बजे घर आ गए, से we've registered you for a voiceover coaching thing. Okay. They paid for me. I didn't even take the money. They dragged me out. ऐसे तो सबके होने चाहिए. होने चाहिए. By God, they're great guys. So I went for this to this studio, and I had no idea of what was happening. But when I stood inside the booth, with these headphones on, and there was this glass, and there was an official looking guy. That's it. And he says, "Start, sir," and all that. And then when I went out, I heard my voice, and everybody said, "Arey sir, aapki to naiya paar ho gayi. Very good, sir." I said, "Wow, okay, thank you." Then they made me a little CD and they said, "Go ahead and hear it." I went home, heard it. In those days, we used to have the home theater system, CD mein daal ke, DVD daal ke. CD wala. And then my son, he was sitting there, and his head spun around. He says, "Dad, is that you?" So I thought I was a voiceover. Then nothing really happened. But a year later, I went and did another course in Pune. Okay. Right. It was done by a chap called Sasha Masan. Okay. And he used to run what was known as the Hudson voice technique. Okay. So I went there. I spent time with him. He was an amazing character. He was a really good voiceover, but he's also a great guy to know. So he taught me this. I came back and I started getting work. I came back and I got, okay, I spent 2,000 rupees to record it and I got 4,000 rupees total. But यार पहला काम था, somebody actually paid. अच्छा लगा मुझे. चीज़ हमेशा याद रहती है, जो पहला जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है. मैंने वो कई दिनों तक वो चेक जो आया था ना, they had paid by check, मैंने उसको फोटोकॉपी करके रख दिया था कि मेरा पहला चेक. Yeah. So that started, and then sometimes things just work out. I started getting in touch with really nice people in the industry who helped me along. They paid well, they paid on time, the work was okay. And then I have a little factory of my own, making bags, belts and stuff. Okay. So एक point आया, then I decided यार मैं ये करता रहूं या वॉइस ओवर में टोटल शिफ्ट करूं. तो उसमें बहुत टेंशन थी. कभी कपड़ा नहीं है, कभी बैग नहीं है, कभी कारीगर भाग गया है. मैंने कहा okay, this is looks a lot easier. I'll go with this. And as I said, I was intensely lucky. I got the right people. I managed to do well. And that's how I became a voiceover as such, right? And उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट जिनके साथ में कई सालों से काम या कई महीनों से काम कर रहा था, उन्होंने कहा कि राकेश जी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उसमें ना एक फीमेल वॉइस भी है, अगर कोई हो तो आप बुला लो. ओके. तो उसके बाद सर 2 वॉइसेस और हैं इसमें, आप किसी को ला सकते हो. ओके. करते करते अचानक हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे कि 4-5 वॉइसेस हैं, लार्जर है. देन आई स्लोली पुट अप माय ओन स्टूडियो and then I also started training. Sasha had given up teaching this Hudson voice technique. तो मैंने उसे कहा कि भैया अगर हम इसको पढ़ा लें. So ever since then, I think we started this in 2009. I've been teaching since then.
and it's so that's how it is. So Now I'm a 2009, voiceover. I can say 2006 आप आपने पहली रिकॉर्डिंग जो जैसा आपने कहा About आपके that, जो yeah, approximately. तो 3 साल के अंदर अंदर आपका you are fully into voice overs जैसे Yes. अगर Absolutely, yeah. And it was, I think, one of the best things that happened to me. I mean, I didn't yearn for it, I didn't plan for it, it just happened by itself, and I've never really looked back after this. I love doing this. really inspiring sir. तो मतलब जो आपने तभी 2009 में जो आपने जैसे कंपनी, if I shall say kind of a firm, so Yeah. तब से Voiceline की शुरुआत हुई थी, Voiceline तब से Studios की। Voiceline की शुरुआत हुई थी। जी जी। ओके तो सर यही चीज सेम चीज जो हम आपकी वेबसाइट में कभी जैसे आपने जो मेंशन किया हडसन टेक्निक, हडसन वॉइस टेक्निक, हडसन वॉइस टेक्निक, उसी का जी। काफी उसमें जिक्र किया हुआ है आपकी वेबसाइट में। हाँ, तो ये स्टीव हडसन जो हैं वो इंग्लैंड में है। ही इज एक अपने ज़माने में बहुत ही बेहतरीन वॉइस ओवर रह चुके हैं, अवार्ड्स मिले हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। तो अलोंग द वे वो सोचते थे कि यार आवाज़ तो मेरी भी है, औरों की है, तो मुझे ही क्यों चूज करते हैं लोग, व्हाट इज स्पेशल अबाउट माई वे ऑफ स्पीकिंग। एंड ही हैड डन द नेशनल थिएटर एंड ऑल दैट, उसमें काफ़ी उन्होंने he had met actors and all that. तो उसको लगा कि ये जो कुछ 5-7 चीजें हैं जो मैं करता हूँ, जिस तरह से मैं बोलता हूँ, उससे ये फर्क पड़ता है। तो वो पढ़ाने लगा, सिखाने लगा लोगों को कि भाई इफ यू डू इट लाइक दिस तुम भी अच्छा बोल लोगे। एंड देन दैट स्नोबॉल्ड इन हिज लाइफ and it became a course and it was being taught around the world. He would license it to Malaysia and Singapore and the US and all that. And so that's how he became a franchisor for the Hudson voice technique. तो आजकल हम उसको यहाँ पढ़ाते हैं हिंदुस्तान में। ओके तो आपके जो जैसे बैचेस वगैरह जैसे कभी ट्रेनिंग्स होती है वॉइस ओवर की, वॉइस एक्टिंग की, तो आपकी ज्यादातर जैसे स्टूडियो में आप बुला के जिस तरह से पूरा ट्रेन करते हैं या फिर ऑनलाइन भी होता है, थोड़ा मुझे पता करना था। हम ऑनलाइन नहीं करते, बीच में हमने कोशिश की थी क्योंकि स्पेशली कोविड के समय yes, तो उस टाइम सब करना चाहते थे, लेकिन मैंने फिर ये देखा कि वॉइस में आई वाज़न्ट वेरी सक्सेसफुल। क्या होता था कि किसी से जैसे आपसे बात हो रही है, आपकी बैंडविड्थ अच्छी है, मेरी बैंडविड्थ अच्छी है, आपका माइक अच्छा है, मेरा माइक अच्छा है, तो हम आराम से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो सीखने आते हैं ना, शायद अपने फोन पे कर रहे हैं और उतनी बैंडविड्थ है नहीं, तो ब्रेक कर रहा है, ठीक से हो नहीं रहा है। सो इट बिकेम अ बिट ऑफ अ मेस, इट वाज गेटिंग अ लिटिल एम्बैरेसिंग। वी वर चार्जिंग फॉर इट एंड देन वी आर नॉट एबल टू 4 दिन डिलीवर नहीं कर पा रहे इसमें। जी, so we got out of the online thing, but we have what is known as a home study course, जिसमें but that has been recorded audio visual thing by Steve Hudson, वो ही भेज देते हैं आपको, उसमें पूरा कोर्स है। वो प्री रिकॉर्डेड टाइप हो गया, वो प्री रिकॉर्डेड टाइप हो गया, या फिर यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो में 1-on-1 करता हूँ या ग्रुप कोर्सेज करता हूँ। सो या दैट इज हाउ। आपका स्टूडियो सर कहाँ पे एग्जैक्टली दिल्ली में? वुड लाइक टू नो। मैंने वैसे तो इट इज इसका जस्ट फॉर द लिसनर्स एंड व्यूअर्स एक्चुअली देखते हैं। या श्योर, आई मीन गुड फॉर मी। ये है शाहपुर जाट नाम की जगह है, जो कि हाउस खास के पास है, दिल्ली IIT के पास है। ओके साउथ दिल्ली में है। And yeah, we've been here for a number of years now in this area. We can say the nearest metro station is Haus Khas. Is Haus Khas. That's right. Yeah. दिल्ली की याद दिला दी सर आपने। Anyways, it's been 3 years anyways. Right. So, sir, and anyways, I would like to tell my viewers, listeners, my subscribers कि मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं सर के साथ एसोसिएट हो पाऊँ कुछ प्रोजेक्ट्स में। I associated with Voiceline on some voiceovers and it was really a great experience. I feel myself lucky कि मुझे भी इस तरह का मौका मिला आपके साथ एसोसिएट होने का। नहीं, seriously, I'll tell you one thing. We worked twice, I think, in the recent past. Yeah. And by and large, they were fairly longish scripts, over the 2 sessions that we did. And the client is generally slightly finicky. Okay. कि सर इसमें ना पिच सही नहीं आ रहा है, सर थोड़ा फास्ट करवा दो, और सर इसमें मुझे लगता है कि एक्सटर्नल नॉइज आ गया है। सो आई सेड ये कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा कि इसमें कोई कमी है। एंड आई डोंट थिंक यू गॉट एनी corrections or retakes or nothing. No. Nothing, right? So I was very happy with the way you did it.
Okay, you know, thank you, sir. one take, boom, and you know, we get the money. So that was nice. बाकी मैं आपसे ये एक इस टॉपिक्स में आपकी सर में राय जानना चाहूंगा कि जी। आजकल जैसे हम एक इंफॉर्मेशन एज पे आ गए हैं, काफी चीजें पहले से आसान हो गई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ किसी को कुछ शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है, तो पहले तो एक समय में इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। अब तो इट्स जस्ट लाइक वन स्टेप अवे, आप कुछ गूगल करते हो, यूट्यूब करते हो, सारी चीजें अवेलेबल है। तो लोग इंडस्ट्री के बारे में अपनी कई राय भी रख देते हैं, जैसे कि कैसे शुरू करनी है, कुछ ऐसे भी वीडियो लोग जिक्र करते हैं कि ठीक है, एक माइक्रोफोन आपने ले लिया एंड आपकी आवाज अच्छी, आप शुरू कर सकते हो। आपको ऐसे माहौल में आप बिगिनर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, दोज हु वांट टू गेट इनटू वॉइस ओवर्स? वाओ, इन शॉर्ट what I'll say is that, you know, very until recently, जब मैंने पहले शुरू किया था, अगर किसी को मैं बोलता था ना very proudly मैं वॉइस ओवर हूँ, तो वो पूछते थे होता क्या यार वॉइस ओवर? They had no idea. A lot of people had no idea what a voice over was. But since then, you know, with the whole world now coming into India with their products, with their services, with whatever information they are bringing, तो हुआ ऐसा है कि वॉइस ओवर में रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ चुकी है फॉर वॉइस ओवर्स, राइट? और अनफॉर्चुनेटली जिसको बोल दे कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, तो वो सोचता है कि मैं वॉइस ओवर हो गया हूँ। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल जो अच्छी आवाज जिनकी है वो बोलते भी अच्छा है, अग्रीड, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक स्क्रिप्ट को पढ़ने में थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी इमोशन होती है, तो वो नहीं समझ पाते हैं उस टाइम। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर कोई किसी को इस इंडस्ट्री में आना है, अच्छा लगता है वॉइस ओवर करना, माइक के सामने अलग अलग कैरेक्टर बनना, तो फाइंड अ गुड कोच और फाइंड अ गुड ट्रेनर, राइट? क्योंकि ट्रेनर आपकी जर्नी जो है ना बहुत कंप्रेस करके छोटी कर सकता है। जो चीज आप ठोकर खा खा के सीखोगे, स्टूडियो में जा जाके जलील हो के कि बार बार जो साउंड इंजीनियर वो है वो कहती है आपने कभी किया या नहीं किया, ठीक से करो ना। हाँ, जो मैंने देखा है औरों के साथ होते हुए, तो वो जो जर्नी है वो काफी कंप्रेस होगी। अच्छा कोच हो या अच्छा ट्रेनर हो तो आपको बताएगा डू दीज थिंग्स एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल, डू दीज थिंग्स एंड यू विल गेट टू दैट पॉइंट फास्टर। तो पहली बात तो ये है। जब भी मुझे कोई पूछता है कि सर क्या मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ या क्या कोई वॉइस ओवर कर सकता है, तो उसका जवाब हमेशा ही होता है कि हाँ जरूर आप भी कर सकते हो। लेकिन असलियत ये है कि बहुत लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इट इज सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन विचएवर लैंग्वेज, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि उसके पीछे कुछ इमोशन है, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, उसको भी लाना है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव एंड ऑल दैट। तो वो चीज आपको एक कोच अच्छी तरह से समझा पाएगा। और जब वो कहते हैं ना हाँ सर मैंने बहुत रिकॉर्ड किया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है सर, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ ना, आधा घंटा में ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ, घूमता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, दैट इज नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑलवेज मीन्स रिकॉर्ड एंड लिसन बैक, रिकॉर्ड एंड लिसन बैक। जब तक आपको सुना ही नहीं दे रहा है ठीक से कि आपने क्या बोला है, हाउ विल यू इम्प्रूव योरसेल्फ? सो बेसिकली टेक ट्रेनिंग, do a lot of recording and listening back to yourself, and that is how you progress. Don't try to jump corners and just start off on your own. Equipment does matter. जो आप घर पे करते हो, अपने लैपटॉप को खोला, वहीं पे बोल दिया, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आप अपने दोस्त को हाय हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसको रिकॉर्ड करके भेज दो, दैट्स फाइन, but it won't work in the professional world. So for that you need to either upgrade your own homes recording area or go to a proper studio. हाँ, मतलब शुरुआत में स्टूडियो हायर कर सकते हैं इन केस अगर बिल्कुल, या those who are starting off. True, yeah, and most studios aren't really backbreakingly expensive either. You know, you hire the studio for an hour or so, kar lo, it's affordable, and what you get paid for it is definitely going to be more than that. So yeah. इनफैक्ट अगर कोई जैसे ट्यूनिंग हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए स्टूडियो के साथ, शुरुआत में जैसे मैं हायर करता था, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, इन दिस प्लेस लक्ष्मी नगर में, तब मेरा जो ऑफिस है वो पीतमपुरा साइड होता था। अच्छा। तो आई वाज इनटू ट्रेनिंग, बट अ डिफरेंट थिंग, आई वाज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर।
Oh, really? So I Okay. used to, with 7 years of experience, Wow. मतलब मैं सब online, how to, you know, market yourself online, you know, optimization, Right. everything. Hmm. So तब मैं रात को स्टूडियो जाया करता था, और हमारे जो स्टूडियो ओनर है उनके साथ इस तरह का वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी कर लेते थे कि रात को कभी 9-10 बजे पहुंचा, रिकॉर्डिंग खत्म की, देन आई एम एट 10:30 or 11 o'clock आई रीच माई होम। इस तरह का Wow. था। बट हाँ, शुरुआत में स्टूडियो, अगर इन केस मैं ये कहना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि शुरुआत में अगर, ठीक है, हर कोई, इट्स नॉट दैट इजी टू सेट अप अ स्टूडियो, अगर नहीं No, it's इन्वेस्ट not. करना चाहते तो शुरुआत में स्टूडियो हायर कर सकते हैं। जी, और अच्छा बिल्कुल, भी है कि हाँ। स्टूडियो एटिकेट्स भी पता लग जाएंगे। हम जाते हैं, कोई सामने साउंड इंजीनियर होता है, उनकी एक वो भी एक अलग तरह का एक्सपोजर कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वॉइस ओवर्स कर रहे हो ना, when you go to a studio, become friends with the sound engineer or the sound recordist. You'll find out so much about what can be done with the voice, what you are sounding like, what he can do to help you, यस, right? And he will give you tips. सर ऐसा मत बोला करो, आपकी आवाज टूटती है यहाँ पे, मत करो ऐसा. Just a casual comment, but you know, okay यार, ये गलती कर रहा हूँ मैं. So make that guy your friend. यस, So spend time with him, maybe take a little break with him, go out, have a cup of tea or something, but make him, because उसका क्या होता है कि उसके पास भी जब काम आता है ना, तो वो भी सोचता है किसको बुलाऊं यार, वो हर्ष जोशी आया था यार, उसकी आवाज है, उसको बुलाता हूं मैं, वो चाय वाय भी, नाइस गाय. So always you're learning all the time. यस, We all get into this fairly in advanced years in life. I mean, not in the first 20 years. We're learning, and then voiceover bhi cheez hoti hai, and then we get in. So, how the script is to be read, how do you behave in front of a mic, how far should the mic be, what should I do to stop the sounds, whatever, it's all a learning process. And it's always better to have somebody from the industry जो अच्छी तरह से जानता है इंडस्ट्री के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में. अगर वो आपको एडवाइस कर रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल सही कहा सर, कि जो जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका तजुर्बा है इंडस्ट्री में, जो जिस तरह से काम होते हैं, जो प्रैक्टिकली रोज उस काम को करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल, उनकी राय जो है वो तो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है इसमें. मैंने भी वैसे ही सीखा है. I got some very good mentors in that. Some were younger than me, but yeah, good mentors who helped me out with how to speak, how to use the mic, how to control my breath, how to control the clicks and pops and all that. तो काफी उन्होंने मदद की है मुझे. Grateful to those guys. So, sir, in the past 10 years, from 2009 and coming towards 2020, कोविड का आना बीच में, और अभी एट द मोमेंट 2023, पिछले 12-13 साल में हर चीज एक हिसाब से चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद क्लाइंट्स, ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स का आना, और साथ में खास करके जब कोविड का समय हुआ तो सबसे ज्यादा होम स्टूडियोज का जो आना है वो कोरोना के समय, कोविड के समय हुआ. सो एज एन एक्सपीरियंस्ड वॉइस आर्टिस्ट एंड कोच, आपने पिछले, अगर हम शॉर्ट में इसमें एक को थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, आपने क्या बदलाव देखा है पर्सनली जो आप फील करते हो? जो बदलाव देखा है, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, कई लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं because of an unfortunate incident in their other lives. They were laid off, or they couldn't travel, or they had sickness at home, and they decided to come in here. But उसमें हुआ क्या है कि there have been a lot of people with really good voices or good ability to speak coming in. So I see a lot of new voices in narrations and documentaries and e-learning. बहुत नई नई आवाजें हैं. And overall, I think the quality of voicing has definitely gone up. Okay, definitely gone up. हाँ, इसमें students हैं, शायद मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, मैं करता हूँ एक छोटे से लैपटॉप पे कर. That is also happening. Yeah, this is also. Yeah, वैसे भी आर्टिस्ट आते हैं, but वो छट जाते हैं बहुत जल्दी, because the professional will not accept that, right? तो कहेगा नहीं भाई, ये तो नहीं है, we need a studio recording or something. So overall, I've seen a lot of improvement. I've seen a lot of home studios improve tremendously. जैसे आप कह रहे हो ना कि कोविड में हुआ था, तो पहले वो जैसे वो इंटरनेट माइक्स होते थे ना, यहाँ पहना हुआ, यहाँ निकला हुआ, उसी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वाला, उसी में करते थे. अब आस्ते आस्ते लोगों ने प्रॉपर माइक्स खरीदना शुरू किया है. They would have software,
अपना Audacity तो है ही है, Audacity तो है ही, Audacity it's तो है। always there, but the other ones also GarageBand and all, जो कि अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So the use of that has started, and although, okay, we'll talk about that later, but basically the pricing has also, for proper work, has also become a slightly better, right? Exploitation and all that, हाँ, हर जगह होता है, वो है. हर जगह होता है सर. So that is nothing, but if you know your worth and you know what you're doing and what it's what you should be paid for it, I think that has improved. And although इसका कोई geographical boundary नहीं है, everything is done on this and on that, but I find that the people in Bombay, they have a much better awareness of voiceovers and what it is and how it should be done. And I've attended courses over there, which was Sasha karta tha. The number of people who would come and they were clued in. ये नहीं कि पता ही नहीं यार वॉइस ओवर क्या है, चल देखते हैं. It wasn't that. They knew what voiceover was. They were serious about a career change or a part-time career, but they were very clear. In many other parts of India, that it hasn't permeated that much. दिल्ली में हाँ फिर भी आजकल काफी हो रहा है. So the work over there in Bombay is phenomenal. But the other thing is, although I talked about money being better, money and payment in the voiceover trade has always been a sore point. कि भाई हमने काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है, or things like that. So because it's not really regulated as such. Voiceover industry हम बोल देते हैं, but it's hardly an industry. It's a collection of a lot of people who do a lot of voices, and one way or the other we get by. So there should be, there should be a little more controlling of that, a little bit of supervision of that, because I have personally not really lost very much by way of not being paid, but delayed, yes, majorly, and sometimes that hurts. So Yes. that payment part of things has gone down because it started with, सर आपको तो पता ही है ना कि सर कोविड हो गया तो पेमेंट में टाइम तो आता ही है, टाइम लग रहा है. So everything was blamed on COVID and मार्केट खराब चल रही है. हाँ सर आपने पहले तो ये 8,000 रुपए में किया था, लेकिन सर इस दफा 5 से ज्यादा नहीं होगा. सर आपको पता है ना कोविड हुआ था. So COVID was blamed for every damn thing. Yes. But I think we have crossed that stage. And the kind of work I am getting now, either personally or the projects that we do, and we hire better people, it's definitely on an up curve. And I will tell anybody, Harsh, I'll use your platform to say this, that if you enjoy doing this, as both you and I know, there can be very long periods of solitariness. You अकेले record भी कर रहे हो, उसके बाद आप अकेले edit भी कर रहे हो, फिर upload कर रहे हो, फिर आया कि भैया ये बदल दो, so go back and edit again. Correction. So it can be a bit of a lonely life at times, that period of time. But if you enjoy doing this, कि वो, it's not always कि मैं characters बन रहा हूँ. E-learning भी होती है. हाँ. घंटों तुम एक ही चीज बोलते जा रहे हो. लेकिन नरेशंस होते हैं, IVRS, बहुत कुछ होता है. Audiobooks is I find that very exciting. तो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इन चीजों में अच्छा लगता है, then look at this as an option. I haven't worn a suit to office for years. I can come in a t-shirt, I can come as I am. There's a lot of informality about it. सर one thing to add, और मैंने कभी मेंशन भी किया, इनफैक्ट जितना हम इसमें कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहनेंगे, इनफैक्ट और अच्छा है. क्या कैसे कहा जा सकता है रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. सो वो है, एंड इनफॉर्मेलिटी है, और एंड इट इज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ सर्टेन क्रिएटिविटी इन्वॉल्वड इन इट, राइट? यू हैव टू बी इन्वॉल्वड इन व्हाट यू आर डूइंग एंड एंजॉय डूइंग इट. यू आर क्रिएटिंग समथिंग. ओके, टीचिंग, हैविंग टॉट so many people, I know one thing. Person who's successful in this is a person who has a great imagination. If you can't imagine that scene, you probably can't voice it very well.
इफ यू कैन सी इट, वो कह रहा है कि ऐसे भालू वहां से आ रहा है और गीदड़ बेचारा यहाँ फंसा हुआ है और बादल ऐसे छाए हुए हैं, एंड इफ यू कैन सी दैट इन योर माइंड, तो आप ना उससे वाइब करोगे और वैसे बोलोगे, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली ना समझाएगी. इट्स, इफ यू कांट इमेजिन इट, इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. ये है. जब हमारे अंदर विजुअल्स क्रिएट होते हैं तो हम और उसको अच्छी तरीके से महसूस करके उसको रीड कर सकते हैं. दैट्स द वर्ड. बिल्कुल, महसूस कर सकते हैं, उससे फीलिंग होती है. बिल्कुल, absolutely. So if you have a great imagination, then generally people who read a lot of fiction and so on build that imagination within themselves because they're reading it, stories and descriptions and all that. तो उनमें वो क्वालिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है. But there's no hard and fast rule. I mean, it can happen to anyone. Or you come to somebody like me, I'll train you how to speak properly. बस सर, बिल्कुल. और यहाँ तक के सर जब वॉइस ओवर में आ जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेशंस, मतलब ये तो एक हिसाब से मल्टीटास्किंग है. ब्रांडिंग योरसेल्फ, ग्राफिक्स पे काम करना, पिच द क्लाइंट्स, नेगोशिएशन. मतलब ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर इज नॉट जस्ट अबाउट द क्राफ्ट, इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स. ऑडियो एडिटिंग सीखना, जितना समय मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं जाता, उससे कई ज्यादा समय एडिटिंग में जाता है. तो बिल्कुल सही कहा सर आपने. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. What I found very difficult earlier was managing finances. Yeah, sometimes I'd do something, work for somebody, I'd forget. So getting that discipline of noting and of remembering and of following up, it is so difficult. And you work with somebody for say 5 years, and then you're dropped. Then you say क्या हो गया भैया, इस साल काम नहीं भेजा. नहीं सर, क्लाइंट कह रहे कि we want a change of voice. बदलाव चाहिए. आपकी आवाज बहुत सालों से चली है, अब now we would like to. So these things happen, but there's always a new client, and you will be replacing somebody else. So yes sir, ठीक है. It's not don't say कि अरे यार मुझे काम नहीं मिलेगा और मैं people are throwing me out. It's not that at all. Be a little, control yourself. Absolutely true. होता रहता है सर. मतलब ये पुराने क्लाइंट्स का रिटेन होना, नए क्लाइंट्स आना, तो ये एक प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जो आपने बिल्कुल सही बात कही इस बारे में. बिल्कुल. या So sir, I shall say thanks a lot for sparing a valuable time and coming to Voice Over Par Charcha. और ये चर्चा ऐसी होती है जो हम चाहते ही नहीं है कि खत्म हो, लेकिन मैं यही कह सकते हैं कि there has to be an end point, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है सबकी. और इन टर्म्स ऑफ जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एक कहीं ना कहीं बाउंडेशन हो जाती है. सो सर, फाइनली थैंक्स अ लॉट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर वेंचर्स, योर फ्यूचर एंडेवर्स, योर स्पेशली फॉर वॉइसलाइन स्टूडियोज. और मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य मिला आपके साथ एसोसिएट होने का. So thank you very much, Harsh, and I can't tell you how happy that I am to be able to be here. Not just because it's talking with you, but it helped me to clear up my head also about what I'm doing over here, how I got over here. तो memories भी पीछे, ये बिल्कुल स्टोरी जरूरी होना है. ये है ये कि you must know where you are, where you are going. तो नॉर्मल डेली लाइफ में तो फंसे रहते हैं, ये सब करते हैं तो थोड़ी यादें आती हैं, and then you. बिल्कुल सर. संकल्प बदलता है. बिल्कुल सर. But thank you very much. Absolute pleasure being here, and I look forward to either working with you more or conversing with you more. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Okay. बिल्कुल सर. Right. Thanks a lot. Bye bye. Thank you sir.